Good morning, students. I am Roshni from Enlightening Yourself. I hope that you have watched my previous videos. Now we are starting the next topic, that is buccal cavity. Students, you have seen that this buccal mouth and buccal cavity. We have talked yesterday also about buccal cavity. So the process of taking food into body. The process of taking food into our body. What we call this process? Ingestion. Ingestion. What we call this process, beta? Ingestion. Now, when we will take food inside our body, then this is called buccal cavity, student. What we call this process? This is called the taking food inside our body, that is called ingestion. And in our mouth, you will see, when you open the mouth, then you will see the area of the mouth inside. What is there? Teeth, tongue, cheeks. This is called buccal cavity. Okay, so this buccal cavity, in this buccal cavity, the food remain for 1 minute also, 2 minutes also. That depends upon you, how you are chewing the food. If you will chew the food properly, then it will remain for some time. But some students, you have seen that they are chewing very fast. So we have to give some time so that the properly teeth will tear into, grind and crush them into very fine particles. So it will help in digestion process properly. Otherwise, our stomach and other parts will have to do a lot of work for the digesting. If we will crush the food into smaller particles, अगर हम उसको smaller particles में माउथ में क्रश कर देंगे, then other body parts को थोड़ा effort कम करना पड़ेगा. Now we have seen yesterday also. We will do the quick revision. So when the food enter in our mouth, then in our mouth, which enzyme is present? I told you, salivary amylase. Salivary amylase. Now this salivary amylase and salivary gland is present in our mouth. This salivary gland release the enzyme. Salivary glands release the enzyme called salivary amylase. Now this salivary amylase break down starch. किसको स्टूडेंट ये ब्रेक डाउन करेगा? स्टार्च को. बट नॉट प्रॉपरली, कंप्लीटली ये स्टार्च को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, बिकॉज food remain in our mouth for short time. So then what this one we have to, then the food particles, the food is this tongue also help in students in proper mixing the food and help in swallowing also. And this food now pass into the food pipe. This is called food pipe. Here now this food pipe joins mouth to the stomach, and this stomach is, student, in the J shape. Which shape? You will see this is the shape of J. You will see, I will show you here, J. J ऐसा ही होता है ना बेटा. Now this is of J shape. अब ये J shape एक muscular organ है. इसमें आपने देखा होगा there are many glands. This is the glands is present. That is called gastric juice. It produce this. There are layers of in the stomach, and this inner layer of the stomach produce gastric juices. What it produce? Gastric juices. Gastric juices release, क्या रिलीज करते हैं? I told you that HCl, hydrochloric acid, enzyme pepsin and mucus. क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूकस. नाउ म्यूकस प्रोटेक्ट दिस लेयर. HCl acid make the food particles acidic. फूड पार्टिकल्स को वहाँ पे मीडियम क्या कर देता है? एसिडिक. एंड पेप्सिन डाइजेस्ट, हेल्प इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन. पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स? पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. नाउ हेयर द फूड कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड. कैसा? सेमी सॉलिड इन द स्टमक. अब फूड पार्टिकल्स पास होते हैं स्टूडेंट्स, यू विल सी इन द
स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से फूड पार्टिकल्स कहाँ पास होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर you will see some glands also release essential substances in the small intestine, like this liver. I told liver is the largest gland. It release bile juice. What it release, student? Bile juice. Now bile juice is released by stomach. Bile juice is released by this liver. Okay, liver release bile juice, and it is bile juice कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर. इट इज स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर. व्हेन द फूड कम्स इनटू द स्टमक, देन फ्रॉम स्टमक it comes into the small intestine. Then this bile juice also mix into the food, and bile juice help in breaking fat present in the food. Fat food के अंदर, like we have eaten butter, milk, you will say ghee. So in this all having fat, so bile juice break down fat. Now this is pancreas. What I am saying here, student, this is pancreas, and pancreas, this is pancreas. Okay, now this pancreas, what it add, this pancreas produce pancreatic juices. पैंक्रियाटिक जूसेस क्या रिलीज करते हैं स्टूडेंट्स, पैंक्रियाटिक जूसेस. और ये पैंक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं ये हेल्प इन डाइजेस्टिंग फैट ऑल्सो, देन स्टार्च ऑल्सो, एंड फैट, स्टार्च एंड प्रोटीन. ओके, दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग फैट, starch and protein. Pancreatic juices means digest all these things, but not completely. Now this pancreatic juices also release some essential nutrients, this pancreatic juices in the small intestine, and they will help in digesting all these things. And the walls of the small intestine, these walls of the small intestine, so walls of the small intestine, you will see that this also help in digesting the fat. They also help in digesting fat. फैट को ये हेल्प करेंगे डाइजेस्ट में, एंड फैट इज completely broken into small simpler substance that is called fat into fatty acid. Fat into fatty acids. Protein into amino acids. Protein into amino acids. And this carbohydrates into carbohydrate को किस में ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स, ग्लूकोज. अंडरस्टूड. तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस. कंप्लीटली डाइजेशन हो जाएगा, एंड the fat which we have eaten, the food in which it is having fat, the food which we have eaten that contains protein or it contains carbohydrate, they are broken into simpler substance. So fat into fatty acid and glycerol also, proteins into amino acid and carbohydrate into glucose. Now we will say that in our mouth, who will help in this one? So they have who first we will our digestion start from our mouth. So in the mouth there is very important role of tongue and teeth. So we will see there are two type of teeth, milk teeth and permanent teeth. This milk teeth here are also called temporary. They are also called temporary teeth, student. temporary जो कि permanent नहीं होते, तो ये temporary और permanent teeth. अब milk teeth falls at the age of 6 to 8. You have studied in the lower classes also. And this permanent teeth are of different types. You will see this permanent teeth are of different types. First I will show you here this permanent teeth. So students, main role of our teeth also very important, and tongue also. We will see the different type of teeth. So first you will see here incisors.
what we call this 4 teeth students, this is one jaw. आपके upper jaw और lower jaw होती है ना, you will see this is lower jaw. Okay, now you are seeing the different arrangement of the types of teeth. So first जो 4 teeth in the front हमें नजर आते हैं, they are called incisor. What we call this front 4 teeth, incisors, and these are very flat and sharp edges. These are having sharp edges. पीछे से flat है students, you will see, and their edge is very sharp, and they are used to bite and cut the food. When you will eat the apple, how you will eat? First you will front 4 teeth. कभी भी आपको उसको molars, premolars, canines use नहीं करते for biting, cutting. So we will use first 4 teeth. They are called incisors. Next, you will see that on both side of the incisors, one and this, both side of the incisors, in each jaw is a sharp pointed tooth. Sharp pointed. They are called, sharp pointed are called in canines. What we call this sharp pointed? We are called this one canines. So these canines are in each jaw is one this side and one this side. So these are one here and one here, and these are 4. Understood? So incisor are 4 in number. These are very flat and sharp edges. Now this canines, you will see canines are pointed, sharp. They are sharp pointed, and canines are used to tear food. Sharp tear food particles. Okay, tear the food. This is the role of canine. और इनका कितना नंबर है स्टूडेंट कैनाइन का? 1 here and 1 here. Okay, then we will see the next. These are broad and flat teeth. Premolars क्या है स्टूडेंट्स? broad and flat. Now this broad and flat teeth, they grind food. What they will do students? They will grind food. They will help in grinding the food and convert into very fine pieces. Okay, very fine pieces it will convert. So this broad and flat are premolars. Premolars are broad and flat, and they grind food particles into fine pieces. What is the number of these premolars? You will see premolars on the each side of the premolars. You will see here this 1 and 2. This 2 this side and 2 this side. This side 2 and this side 2. Okay. Next we will see the premolars के बाद students molars. So molars का क्या है रोल? Molars also same. Molars also you can say students that this molars are also broad and flat. These are also broad and flat. These are also broad and flat. Now they are also crush and grind the food. They are also help in crush and grind the food. Now they are at the, you will see in some are having 3 on each side of the jaw, and some are having 2 also. किसी में 2 भी हो सकते हैं, and in some person it is 3 also. Now you will see the total number of teeth. Now how many total number of teeth students? You will see 4 are here. These are 4 incisors. Incisors कितने हैं? 4. Then canine कितने देखे स्टूडेंट हमने? 1 this side and 1 this side. 2. Then हमने molars कितने देखे स्टूडेंट्स? 2 this side and 2 this side. 4. And premolars क्या है? 3 this side and 3 this side. 6. कितने हो गए थे premolars? Molars 6. So 4 plus 2 6, 6 4 10, or 10 or 6 16. So total 16 in each jaw. Lower jaw 16 and upper jaw 16. So total number of teeth are
32 in each person, but in some person the number also may be decreased also. That's depend upon their body. Now we will see the next one. This teeth, we have seen the types of teeth and their arrangement also. Now you will, before going to the next topic, I want to tell you about their teeth decay. Students, teeth are very very important and we have to take care. If we will not take care properly, then the tooth decay starts. What happen when in our mouth there are some bacteria are present. Normally bacteria are present in our mouth and they are not very harmful. Now what happen when there is any food particles left, कोई भी food particles हमारे माउथ के अंदर अगर रह जाता है तो what happen, this bacteria after eating many harmful bacteria also begin to live and grow it. So many harmful bacteria also begin to live and grow on it. उसके ऊपर अगर फूड पार्टिकल्स रह जाएगा उसके ऊपर बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रो करना स्टार्ट करेंगे एंड दे विल ब्रेक डाउन शुगर. शुगर को जब वो ब्रेक डाउन करेंगे देन व्हाट दे विल प्रोड्यूस स्टूडेंट्स, दे बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस एसिड. अगर वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे माउथ की, आप ये 10th जाके देखना, एक पीएच वैल्यू होती है, ठीक है. सो माउथ की पीएच वैल्यू क्या होती है, 5.5. तो इससे अगर माउथ के अंदर और ज़्यादा एसिड आ जाएगी तो माउथ की और ज़्यादा एसिड आने के कारण क्या होगा, ये टूथ पीएच वैल्यू जो 5.5 से भी क्या हो जाएगी, कम, लोअर हो जाएगी. ओके, और फिर लोअर होने के कारण ये जो हमारा टीथ का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इनामल, इट विल, ये क्या होने लग जाएगा, खराब होने लग जाएगा. दिस इनामल बिकॉज ऑफ द एसिड रिलीज बाय द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया ने एसिड कब रिलीज की थी, जब फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ के अंदर रिमेन होंगे और जब वो फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन इनटू शुगर, ठीक है, break down the sugar present in this food, it will break down and produce acids. So ये एसिड हमारे टूथ इनामेल को क्या कर देंगे, डिके करने स्टार्ट कर देंगे एंड वी विल फील वेरी मीन्स पेन इन आवर माउथ, इन टूथ पेन, या विल से टूथ एक. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रेगुलर, हमारे क्या करना चाहिए, ब्रश और दांतुन कर सकते हैं. इससे क्या होगा, हमारे माउथ के अंदर क्या रिलीज होता है स्टूडेंट्स, एसिड, और हमारे टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, बेस. तो बेस क्या करता है, बेस विल न्यूट्रलाइज, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज, NEUTRALISE, न्यूट्रलाइज कर देगा एंड हमारा टूथ डिके नहीं होगा. अंडरस्टूड. We will move our next topic. Now we will see when we eat in our mouth. I told you what I told, that whenever we eat something in our mouth, then these salivary glands break down the food. Salivary glands क्या करते हैं students? I told you that it will break down food particles को ये break करेंगे. How salivary glands food particles को break करेंगे? सैलिवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज कर रहे हैं, स्लाइवा. ओके, सैलिवरी ग्लैंड से स्लाइवा रिलीज होता है और एंजाइम, व्हाट इज कॉल्ड द एंजाइम, सैलिवरी एमाइलेज. ये किसको ब्रेक डाउन करते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्च को. हाँ, ये इसको किसको ब्रेक डाउन करते हैं, आप ये कह दो, कार्बोहाइड्रेट को. व्हाट इट विल ब्रेक डाउन, कार्बोहाइड्रेट. सो जब भी आप माउथ के अंदर फूड रख दिया तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी. और किस में ब्रेक डाउन होगी, वो शुगर के अंदर ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी. नाउ इन दिस 2 टेस्ट ट्यूब, हियर आर द 2 टेस्ट ट्यूब. इन दिस 2 टेस्ट ट्यूब, इन 1 टेस्ट ट्यूब आई हैव लेबल्ड A, अनदर टेस्ट ट्यूब आई हैव लेबल्ड B. एक के अंदर हमने क्या डाला है, सम बॉइल्ड राइस. क्या डाला हमने, बॉइल्ड राइस.
अदर वाले में जो राइस हमने डाले हैं दैट इज़ आफ्टर चूइंग, हमने 3 to 5 मिनट्स उसको चबाए हैं। किसको? जो बॉइल्ड राइस को अपने माउथ में लिए, उसको अच्छी तरीके से 3 to 5 मिनट्स चबाए हैं, चूइंग किए, एंड देन विल पुट इट दैट वन बॉइल्ड राइस इनटू द this test tube B. Now then we will add 2-3 drops of iodine solution in each test tube. Each test tube के अंदर हम क्या डालेंगे? Iodine solution. When we put the iodine drops in this test tube A, the color is black या bluish black you can say. किसी बुक में bluish भी हो सकता है और bluish black also written. Okay, but in this test tube student, when we have added here boiled rice, in this test tube the color will not change. When I have the color not change when I have added this 2-3 drops of iodine solution. Why? Because this saliva ने हमारे माउथ के अंदर जो saliva है, saliva ने क्या रिलीज किया? salivary amylase, and salivary amylase break down starch into sugar. जो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे माउथ के अंदर गई थी या स्टार्च जो थी उसको किसके अंदर ब्रेक डाउन कर दिया? शुगर के अंदर ब्रेक डाउन हो गया. सो नाउ हियर द फूड इज इन आवर माउथ दैट इज ब्रेक डाउन इनटू स्टार्च. सो वी कैन से दैट दिस starch is not present here, it is broken into sugar, so it will not show the iodine test. So iodine color, if starch is present here then only it show bluish black color, but if this starch is not present here then no change color, not change of color, कोई कलर में चेंज नहीं हुआ. Okay, not, you will say bluish black color also not shown by this test tube B. So what we understood, that if the food having starch, means what we will say here, the starch shows that we will break down this iodine solution shows that this boiled rice have starch, and this after chewing, what we will say that in our mouth, chewing starts in our mouth and it will break starch into starch into sugar. Next you will see this tongue is also a very very important role of tongue. The role of tongue is also, student, very very important. See, tongue is a very fleshy muscular organ. कैसी organ है? वेरी मस्कुलर. इसके अंदर कोई भी बोन्स नहीं होती, ये मेड अप ऑफ मसल्स. सो इट इज़ ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन. अटैच, वेयर इट इज़ अटैच? बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी के अंदर बैक में ऊपर से ये अटैच है, एंड फ्रंट पार्ट इज फ्री एंड इट्स मूव इन ऑल द डायरेक्शन. ये हमारी टंग मूव कर सकती है. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ टंग? इट हेल्प इन मिक्सिंग द फूड पार्टिकल्स. It help in mixing the, you will see here this, it help in mixing the food particles and saliva. It mix the saliva with food also during chewing and help in swallowing also. Number 1, swallowing. Second, help in mixing saliva with the food, and this food when properly mixed, it is converted into a ball. ऐसे बॉल की तरह वो कन्वर्ट हो जाएगा, इकट्ठा सा सलाइवा के साथ टंग मिक्स कर देगी. दैट इज कॉल्ड काइम. इसको हम क्या बोलते हैं? काइम. CHYME. ये इकट्ठे सारे फूड पार्टिकल्स जो हमारे टीथ ने ब्रेक किए थे वो एक इकट्ठे से हो जाएंगे सलाइवा से, एंड बाय द हेल्प ऑफ टंग ऑल्सो, सो दैट इकट्ठे को उसको हम क्या बोलते हैं? काइम. Now in our tongue also you will see there are different taste buds present. I will show you the figure of the tongue. Now this tongue is having taste buds. Now all these taste buds are present in our tongue. So which type have you seen the tongue? So in this here, which taste bud is present? You have seen in the earlier classes also, students. Sweet. जब भी आप मीठा कुछ खाते हो तो यहाँ से टेस्ट हो, ये टेस्ट बड्स होते हैं फॉर योर स्वीट, यानी मीठी चीज़ के लिए. नाउ दिस सेकेंड वन, हेयर द टेस्ट बड्स आर सोर. यहाँ पे आपको टेस्ट सोर, खट्टी चीज़ों का टेस्ट यहाँ पे टेस्ट बड्स होंगे, विच टेल्स अस वेदर दिस सब्सटेंस इज सोर इन टेस्ट और
not. And here these are the taste buds which tells us whether the substance, sorry, this one is sour is this one, okay students, and this one is salt, सेकेंड वन इज, सो दिस, यहाँ टेस्ट बड जो होंगे वो हमें क्या डिटेक्ट कराएंगे, स्वीट, किसी भी मीठी चीज़ के लिए. सेकेंड यहाँ पे जो सॉल्टी, कोई भी नमकीन चीज़ होगी, सॉल्ट का टेस्ट हमें इस टेस्ट बड से आता है. और थर्ड जो, अगर किसी का टेस्ट लाइक यू हैव ईटन टोमेटो, यू हैव ईटन लेमन जूस, ओके, यू हैव ड्रिंक लेमन जूस ऑल्सो, या देन सोर, खट्टी चीज़ों का टेस्ट हमें दिस टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट हेयर. एंड द लास्ट जो कड़वा टेस्ट हमें आता है, दैट इज़ बिटर, दैट टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट हेयर. लाइक अगर आप नीम के पत्ते खाते हो तो आपको कैसे टेस्ट आएगा, दैट इज़ बिकॉज कड़वा टेस्ट, वो यहाँ से आपके टंग देखोगे, आपको यहाँ से कड़वा सा महसूस होगा. सो दिस आर बिकॉज ऑफ द टेस्ट बड प्रेजेंट ऑन द. अगर टेस्ट बड्स नहीं प्रेजेंट होते, देन यू विल नॉट एबल टू टेल वेदर दिस इज स्वीट, सॉल्ट, sour or bitter. You can't identify any taste of the any substance. Now we will see the food pipes. Next is the here is shown some important things, students. We will revise this one also. Sometime I will eat in hurry. So while eating, some in our mouth you have seen that I will show you with the diagram. Like this is food pipe, and along this food pipe there is windpipe also, and here is a flap, एक closed structure होता है जिसको यहाँ से close रखता है. So when we eat something, so we have not to talk, हमें बात नहीं करनी चाहिए. Why? Because if we will talk, then our windpipe is also open. Windpipe open हो जाएगी, and food particles passed in फूड पार्टिकल्स कहाँ पास होंगे, फूड पाइप्स से पास होने की वजह वो विंड पाइप्स में भी चले जाएंगे. देन ऑटोमेटिकली व्हाट वी विल डू, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, वी विल कफ, हिकअप्स मीन चॉकिंग, हम जोर जोर से खांसते हैं. देन द फूड पार्टिकल्स जो एंटर होते हैं उसमें, वो अगेन विद द हेल्प ऑफ द दिस एयर प्रेशर, जो हम कफिंग करते हैं एयर प्रेशर से, अगेन दिस फूड पार्टिकल्स कहाँ से, विंड पाइप से अगेन कहाँ जाएंगे स्टूडेंट, फूड पाइप में आ जाते हैं. सो वैन एवर वी विल ईट, वी विल नॉट टॉक एट दैट टाइम. सो फूड पाइप एंड विंड पाइप, देयर इज ए, you will see at the food pipe and wind pipe there is a common, this is food pipe and this is wind pipe. So there is a food prevent from entering the food pipe, so there is a flap like valve close the passage of the wind pipe and guide food particles into the food pipe. So यहाँ पे क्या होगा, एक flap सा होगा स्ट्रक्चर जो कि food particles को food pipe में ही enter करने दें. But if you will talk, this flap like structure will open and food particles enter in the wind pipe, so that we feel चॉक, गेट हिकअप्स एंड कफ, मतलब हमें हिचकियाँ से आने लग जाती है और हमें मतलब खांसी आती है जोर जोर से. दिस इज बिकॉज ऑफ द फूड पार्टिकल्स एंड इन दिस वन, एंड बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर देन इट रिलीज आउटसाइड. नाउ वी विल सी फूड पाइप एसोफेगस. व्हाट वी कॉल दिस फूड पाइप स्टूडेंट, एसोफेगस. नाउ वी विल सी toothpick, what is shown here in this activity, some common salt, sugar, you will see. Now this one you will, by eating all these things, if you will eat all these things given in the this activity, now you try to eat and find out from where, which part of our tongue help in detecting the sweet, sour, bitter, salty, all the taste buds you will able to identify. Now you will see the food pipe. Now this is called, students, food pipe. This is food pipe. Now mouth and the stomach are attached with the help of food pipe. Okay, that is called esophagus. Now in the food enter in the mouth. Inside the food pipe there is contraction and relaxation of the muscles. Muscles क्या करती हैं, contraction कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, फिर रिलैक्स, फिर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट, फिर
relax. So this contraction and relaxation of the muscle is called peristaltic movement. Sorry. Peristaltic movement. So this moment, the foot moves from one part to next part, here and here. This is because of the contraction and relaxation of the muscles. अंदर ये muscles inner wall of the foot pipe, they will do contraction, contract होगी, relax होगी. So इस तरीके से contract and relax. तो इस तरीके से होने से क्या, this is called peristaltic movement.